Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of physics. This is lecture number 39, part 2, in which we are going to cover the topic that is states of equilibrium. There are three states of equilibrium, the name of which you can see on the whiteboard. The first one is stable equilibrium, the second one is unstable equilibrium, the third one is neutral equilibrium. Now, let me explain these three states to you one by one. The first state, that is stable equilibrium, is the state in which the body comes back to its original position after disturbance. मीन्स अगर हमने किसी बॉडी को डिस्टर्ब किया फोर्स लगाकर और अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो ऐसी सूरत कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कौन सी स्टेट कहलाएगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी डिस्टर्बेंस के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन इख्तियार ना कर पाए तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी, ऐसी स्टेट कहलाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। You can see here the definition. The body does not come back to its original position, then such a state of equilibrium is called the unstable equilibrium. And if the body occupies new position similar to original position, then the body is said to be in the state of neutral equilibrium. And we can say कि अगर हम बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो उसको क्या होगा, बॉडी नई जगह इख्तियार कर ले, नई पोजीशन पे चले जाए, मगर उसकी ओरिजिनल हैयत क्या रहे, वैसी ही रहे जैसे कि पहले हो। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी स्टेट में कहलाएगा, ऐसी स्टेट में वो बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताई है अबाउट स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मगर जैसा कि आपको याद होगा, गुज़िश्ता क्लास में मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया था। I told you about the center of gravity in my previous lecture, in which I told you that center of gravity is the point at which the whole weight of the body appears to act. You can see here, there are three examples given on the board. A cone lying on its base, a cone lying on its apex, and a cone lying on its side. ठीक है ना। So center of gravity is the point where the whole weight of the body appears to act. We can say कि हम इस कोन को इस सेंट्रल पॉइंट से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सारी पूरी इस कोन का जो वेट है वो किस पे, इसका मदार कहाँ पे है, इसके सेंटर पे है। ठीक है ना। अगर मैं इसको उठाती हूँ, एपेक्स से अगर उठा के मूव करती हूँ तो क्या होता है कि आप इसको जब मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इस कोन की थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। यू कैन सी द रेड पॉइंट हियर। प्रीवियसली इट वाज द ब्लू, ओके, जब वो किसी ओरिजिनल पोजीशन पे रखा हुआ था, टेबल पे, ग्राउंड पे, और जब उसको हमने डिस्टर्ब किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गई, थोड़ी सी ऊपर हो गई। आप देख सकते हैं ब्लू के बाद ये रेड पॉइंट किसका है, न्यू पोजीशन ऑफ द कोन। ओके, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी ऊपर हो गई है ऑन डिस्टर्बिंग दिस कोन। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर डाउन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ जाए किसी भी ऑब्जेक्ट की गुज़िश्ता पोजीशन के मुकाबले में, तो उस सूरत में बॉडी क्या होगी, कौन सी स्टेट में चली जाती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाती है। ठीक है। और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ऊपर हो ना नीचे हो, मतलब कि डिस्टर्बेंस के बाद जब आप सोचिए कि अगर इस कोन को थोड़ा रोल करते हैं तो रोल डाउन होने पे ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से ऊपर जाएगी ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के करीब जाएगी, बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम पोजीशन एंड लाइज ऑन द सेम लाइन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। सो दिस इज द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो इट मीन्स दैट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड अप एज कंपेयर टू इनिशियल पोजीशन। यू कैन सी हियर इन द फिगर। ओके, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर देन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। You can see here in the example as well, okay, with the help which is in the pictorial form. And
If the position of its center of gravity does not change, so it means does not change this position, the position of center of gravity does not change, it means the body is in the state of neutral equilibrium. Okay, so I think this is clear about this, all of you are clear about this stable, unstable and neutral equilibrium. Neutral equilibrium को हम इस तरह भी define कर सकते हैं कि on disturbance the body does not come back to its original position, but the body occupies new position which is similar to the original position. सही ना? So that's these are the definitions of stable, unstable and neutral equilibrium. Okay. अब आपको एक और तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने अगर यहाँ पे इसको अपेक्स से जब मैंने इसको पकड़ा था इस कोन को, तो इस पॉइंट पे सस्पेंशन था. सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नीचे है. किस केस में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में. और अगर यहाँ पे बात करें सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? यहाँ से मैं कोन को पकड़ती हूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? अगर मैं इस कोन को पकड़ती हूँ यहाँ सेंटर से तो सस्पेंशन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी both lies at the same position. So this is the state of neutral equilibrium. मतलब कि मैंने आपको ये तीनों डेफिनेशंस तीन अंदाज में बताई हैं. एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अकॉर्डिंग, एक तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अकॉर्डिंग और एक पोजीशन के लिहाज से कि बॉडी आया अपनी ओरिजिनल पोजीशन इख्तियार करती है या नहीं इख्तियार करती है. चलिए हम इसी स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मैं आपको एग्जांपल्स मज़ीद बताऊंगी डेमोन्स्ट्रेशन करके. आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल. सेकंड एग्जांपल दी हुई है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दी हुई है वर्टिकली स्टैंडिंग पेंसिल, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दी हुई है रोलिंग बॉल. सो लेट्स सी द demonstration of these examples. Yes, just see the example of this book for the stable equilibrium. I told you in my previous lecture that any object which has particular geometrical shape, most probably the center of gravity lies at the center of that पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप. सही ना? कोई भी पर्टिकुलर शेप होता है, जैसे रेक्टेंगल का मैंने बताया था आपको कि इट्स एट द सेंटर ऑफ द, इट्स एट द पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स. ओके, ये हम डायगोनल्स अगर बनाते हैं, डायगोनल्स क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ एनी ऑफ द पैरेललोग्राम. सो ये अगर आप यहाँ से यूँ ज्वाइन करें, यहाँ से इसको इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन करें, सो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी लाइज एट द सेंटर ऑफ दिस बुक. सही ना? अब इसको ये बुक आप देख सकते हैं कितनी थिक है. You can see here the thickness of this book. It means that center of gravity lies somewhere here. Okay, here as well. Okay, means कि पूरा हम penetrate करें इस पेंसिल को तो क्या होगा? ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. ठीक है ना? It means that when we disturb this book, means when we apply the force on that book, so what happens? Just see, you can see here center of gravity is raised up. Center of gravity is raised up, and when we leave that book again, जब इस किताब को छोड़ देंगे तो the distance between the distance of the book, center of gravity and the table again सेम. ओके, मीन्स ये समझ लीजिए जब हमने इसको उठाया किताब को तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गई, और जब हमने इसको छोड़ दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा से उतने ही फासले पे आ गई इस टेबल से जितने पे वो पहले थी. ओके, एंड वन मोर थिंग यू कैन सी हियर दैट व्हेन वी डिस्टर्ब दिस बुक आफ्टर डिस्टर्बेंस द बुक एक्वायर्स द सेम पोजिशन. बुक की क्या हो जाती है? पोजिशन सेम हो जाती है आफ्टर डिस्टर्बेंस. ठीक है, आप जितना भी इसको मूव कर लेंगे इसके बाद क्या होगा? बुक को छोड़ेंगे तो बुक अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे ही आ जाएगी. सही ना? नाउ जस्ट लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस पेंसिल. दिस इज अ वर्टिकली स्टैंडिंग पेंसिल. ओके, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज हियर समवेयर. ओके, यहाँ पे लाई कर रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब जब मैं इसको छोड़ूंगी तो क्या होगा?
डेफिनेटली इट विल कम डाउन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, नीचे होती चली गई, है कि नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी यूं है, यहाँ पे ऊपर जिस लेवल पे है टेबल से इतने फासले पे है, जितने भी फासले पे भी है, अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी नीचे 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 होती चलेगी। ऐसा ही है ना, सही ना। इसका मतलब ये हुआ। और इसकी एक और बात बता दूं कि व्हेन वी डिस्टर्ब दिस पेंसिल सो द पेंसिल विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जस्ट सी, just you can see here, yes, now it does not come back to its original position. Okay, so it means that this is the state of unstable equilibrium. Just look at this pen here, the center of gravity is at the center of this pen, okay, and it is lowering down and it is in the state of unstable equilibrium. जब हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जब उसको छोड़ रहे हैं, so it is coming down, सही है ना, and it will not come back to its original position. Just see, okay, so you can see here it is not coming back to its original position until unless मैं इसको खुद पकड़ के सीधा करूँ, ठीक है ना। And now the third example is of the ball, okay, rolling ball. It rolls, okay, you can see here the center of gravity is at the center of any circular object. This I have already told you in my previous class, in my previous lecture. So when the ball is rolled down, when the ball is rolling down, so the center of gravity is neither coming up and neither going down. It remains same at the center position. Okay, इसके जो center position है वो change नहीं होता है, center of gravity जो है वो as it is रहता है, चाहे हम उसको जितना भी इसको हम ऊपर कर लें, roll down कर लें, मगर the center of gravity remains at the same position. At the center of gravity does not rise up and does not go down. Okay, so these are the three examples of stable, okay, which I have given you through this book. The example of vertically standing pencil or pen, for which I have given you unstable, for which these examples I have given you for unstable equilibrium, and the rolling ball, which I have given you for what purpose, for the clarification of neutral equilibrium. Okay, now I will tell you one more example related to this neutral equilibrium. Just look at the board, whiteboard. Yes girls, just see the example of this rolling wheels, which you can see in the definition of neutral equilibrium. The moving vehicle having the wheels, all the rollers of the trolley which is moving, they give the example, they can be the example of neutral equilibrium, because the center of gravity of the wheels is neither moving up neither moving down, but it remains at the same line from the surface of the road. Okay, so this is again the example of neutral equilibrium. Means any circular object, any spherical object can be placed in the example as an example of neutral equilibrium. Okay, now just note down the homework for the day today. You have to learn question number 4 of chapter number 6, given on page number 5 of the notes, which you will get in the PDF form, and the topic for this chapter number 4, question number 4 is the same, that is the states of equilibrium. I hope you will learn your work, and inshallah we will meet in the next class with the new topic or with the new lesson. Till then, Allah Hafiz.